Hello students, welcome back to English Master. Today we will be learning second part of the chapter Understanding Diversity, which is from grade 6 and Civics. So here we learnt about Sameer 1 and Sameer 2 in part 1. Let us begin part 2. So here it says make a list of festivals that might have been celebrated by the two boys, Sameer 1 and Sameer 2. So this is the activity which you have to do on your own. तो आपको बताना क्या है, समीर 1 जो किस रिलीजन को बिलोंग करता था और उस रिलीजन में कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और समीर 2 ऑल्सो द सेम विच रिलीजन ही यूज्ड टू बिलोंग एंड व्हाट सेलिब्रेशंस आर डन इन दैट रिलीजन. कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. राइट अ स्टोरी दैट डिस्क्राइब्स दिस. तो आप एक स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें बता सकते हैं कि आपका एक फ्रेंड जो आपसे बहुत अलग था या ऐसी सिचुएशंस में आपको मिला था. In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. तो हमने अब तक पढ़ा, तो राइटर इज टेलिंग कि Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other. Not only religious things are different or their cultural backgrounds are different. For example, while Sameer 1 goes to school, Sameer 2 sells newspaper. So this is one difference. Sameer 1 goes to school or Sameer 2 sells newspaper because he is poor and he cannot afford education expenses. Sameer 2 did not have the opportunity to attend school. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. तो समीर 2 जो है उसको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो स्कूल जाता. शायद उनको वो इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत पुअर हैं और उनको दे डोंट हैव इनफ टू ईट और वेयर एंड इवन समटाइम्स दे डोंट हैव अ प्लेस टू लिव ऑल्सो. दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट द इनइक्वालिटी. तो यहाँ हम किस बात की बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट कॉल्ड डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी. ये इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, पुअर पीपल है वो. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. तो ये किसे कहते हैं? जब हम देखते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी रिच लोगों को अवेल है और वो पुअर को अवेल नहीं होती, तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी कहते हैं. सो ब्रिंगिंग डिफरेंशिएशन for the sake of their living standard becomes inequality. The caste system is another example of inequality. According to this, society was divided into different groups depending upon the work the people did and they were supposed to remain in those groups. तो कास्ट सिस्टम क्या है? एक और एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, जिसमें सोसाइटी जो थी वो किस में रहती थी? डिफरेंट ग्रुप्स में डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क. सो हाउ द कास्ट सिस्टम इवोक्ड. बेटे ये ऐसे ही नहीं आ गया था, बल्कि क्या हुआ था कि जो काम जो जिसको करता था उसी के अकॉर्डिंग लोगों ने इसको डिवाइड किया था सोसाइटी को. that people did and they were supposed to remain in those groups. तो वर्क के अकॉर्डिंग उनके ग्रुप्स बना दिए गए थे और वो उसमें रहते थे. So this was not any other way of finding difference among people. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. तो ये उन्होंने एक वो लगा दिया था प्रतिबंध कि if your father is a potter, like he makes pots, so you can also make pots and you cannot do anything else. This system was considered irreversible. तो ये सिस्टम irreversible था, ऐसे ही चलता रहता था. It did not stop, ऐसे ही घूमता रहता था. And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो आपको क्या कहा गया कि आप अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ज़रूरी हो गया कि आप वही प्रोफेशन में रहेंगे. दैट इज़ हाउ पीपल विल नो अबाउट यू, दिस इज़ व्हाट यू डू.
This created a situation of inequality. You will read more about this in and other inequalities in the following chapters. So this is how, if the person is a potter, he will remain potter only. He cannot change his profession. So he will always be treated unequally. What does diversity add to our lives? अब हम पढ़ते हैं diversity हमारी life में क्या add करती है. Just like Samir 1 and Samir 2 became friends, you might have friends who are very different from you. You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learnt some of their languages as well. तो जैसे समीर 1 और समीर 2 फ्रेंड्स बन गए, मे बी यू विल ऑल्सो हैव सो मैनी पीपल अराउंड यू who will be different just like they both were different, quite different from each other, and you must be finding a lot of different festivals that will be celebrated in their homes, and the languages also can be changed. Maybe your language will be changed of them. Make a list of food that you have eaten from different parts of India. Make a list of the languages besides your mother tongue that you can speak at least 1 or 2 words of. So you can understand there are different people living in the whole India. It is very diverse. Wherever you will go, you will find the variety of foods that will depend upon the area. तो आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें आप बताएं. जैसे साउथ इंडिया में हम क्या देखते हैं, दे पीपल ईट idli, dosa, vada, utpam, idiyappam and all. But if you see North Indian people, they eat paratha, chapati, rajma, rice and all. So you can find the difference. Even diversity is in the food also. You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. Perhaps you even enjoy making up story yourself. Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. People who write stories get their ideas from all sorts of different places, from books and real life and from their imagination. तो ये हमें एक hint दिया गया है, how to write a story. To do this question, how can we do? So what we have to do, we have to use our imaginations and we have to notice people around, what kind of food they eat, how they live, then only we can weave a story. तो हमारी स्टोरीज को ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Others read real accounts of kings and queens and wrote stories about love and honor. Some dipped into their own childhood memories of school and friends and wrote stories of adventure. तो it depends. कुछ लोगों को क्या हुआ, उन्होंने फॉरेस्ट और एनिमल्स को देखा और उनसे उनकी लाइफ से अट्रैक्ट होकर उन्होंने स्टोरीज लिखी. तो दे वर स्टोरीज अबाउट द फ्रेंडशिप एंड द फाइट्स ऑफ एनिमल्स. और हम देखें तो दूसरे क्या थे, किंग्स और क्वींस थी, उनके रियल अकाउंट, हाउ दे वर and how they used to be and how they lived their lives, वो लिखते थे. रोट स्टोरीज लव और ऑनर की. और कुछ जो लोग थे उन्होंने अपनी ही चाइल्डहुड मेमोरीज को स्टोरीज में लिखा. इमेजिन if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals, for example the deer and the cat, and to entertain themselves played snakes and ladders, what kind of stories do you think they would write? तो this is the situation given कि अगर हम ऐसे ही लोगों के साथ में रहे जिन्होंने दो ही कलर पहने हों, सदा रेड और वाइट, और जिनका फूड भी शायद सब ने पटेटोज ही खाए हों और सब ने दो ही एनिमल पाले हों, वो क्या है, डियर और कैट. सो व्हेन यू फाइंड थिंग्स हैपन सिमिलरली देयर इज नो चेंज हैपनिंग बेटा. जब हम देखते हैं चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा, सब कुछ एक जैसा होता है, तो क्या लगता है आपको कोई अच्छी स्टोरी क्रिएट हो पाएगी? नहीं ना, बिकॉज इट विल बिकम ऑल मोनोटनस, सब नीरस हो जाएगा क्योंकि उनके आसपास कुछ और दिखाई नहीं देता. तो इससे कहने का मतलब ये है कि जो हम स्टोरीज पढ़ते या लिखते हैं वो हमारे आसपास से इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं. इमेजिन दैट यू आर अ राइटर और एन आर्टिस्ट हु लिव्स इन अ प्लेस डिस्क्राइब्ड अबव. दिस वन, either write a story or draw a picture of your life here. Do you think you would enjoy living in a place like this? List 5 different things that you would miss
द मोस्ट आउट ऑफ यू लिव्ड हियर। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ना हो तो हमारी लाइफ ऐसे डल और बोरिंग हो जाएगी। Because eating potatoes every day you will not like. Wearing the same color you will not like. Even having only two pet animals, seeing them every single day you will not like. So this is how diversity is very much important. Diversity in India. India is a country of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religions. But actually, if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमारे फेस्टिवल्स डिफरेंट हैं, हमारी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन्स, बट स्टिल देर आर मैनी थिंग्स दैट वी डू सेम वे, लाइक वी ईट सेम वे, वी wear clothes the same way, maybe that are little bit different according to the area we belong. How do we explain diversity? अब क्वेश्चन आता है कि डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कैसे करें. A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or a car became a part of our lives. People traveled from one part to the world to another in ships, on horses or camels or on foot. So you can imagine how hard it was to travel from one place to the other. But now we have lot of mean of, see, we have train, we have aeroplanes, so we have many ways to travel from one place to another place. So these are called our means of transport. So we have lot many means of transports now, and in past people used to do walk like this, which was very difficult. So list at least 3 different ways in which people in India do the following. One of the possible answers has been provided for you already. So this you try on your own. Different ways in which people pray. कौन कौन से लोग होते हैं जो किस तरह से pray करते हैं? Through singing a hymn. This is done in Christians. So they sing hymns. What is done in mosque? What is done in temple? You can fill another, or else Gurdwara. Different ways in people get married. How? Through singing a register in the court. How do they get married? Another 2 religions you can write here. Different ways in which people dress. How do they dress? They also dress differently. Like, see, in Manipur women wear a fanek. Different ways in which people greet each other. How do we greet? Like here in Jharkhand, many Adivasis say Johar to greet each other. Like we say Namaste or Sastriyakal or Salam Alaikum. So whatever it is. So that is how we greet each other. So that another 2 you can fill on your own. Different ways in which people cook rice. How do they cook? Some people cook biryani. Some make with meat or vegetables. So how do you cook, and what else you see others doing? So these also can be filled only the way people cook rice. So different ways of cooking rice. So these 2. So this is how you will get to know how different things are and how they are diverse. Often they went in search of new lands or new places to settle in, or for people to trade with, and because it took so long to travel, once they got to place, people stayed there often for a long time. Many others left their homes because there were famines and drought and they could not get enough to eat. Some went in search of work while others left because there was a war. तो यहाँ बताया गया है how difficult it was in the past. कुछ लोगों को ट्रैवल करने में क्या होता था, जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, कुछ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए. क्यों? कुछ तो लॉन्ग डिस्टेंस होने से रास्ते में मर भी जाते थे, बिकॉज traveling on horseback or on camelback was not easy. Like we can travel in blinks, we can go in a very faster way through aeroplanes, trains, and we have lot many means of traveling. You know very well that transportation has become so easily available that you can go far off places in no time. लेकिन पहले के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो उनमें से कुछ ने सूखे की वजह से जगह छोड़ दी क्योंकि they did not have enough to eat. इसलिए कुछ लोगों ने और जगह छोड़ी because there was a war. So there were many ways, many different factors which pushed people to leave the place. Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their languages, food,
म्यूजिक रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड न्यू। तो वो जब यहाँ से हटे, सपोज अगर वो यहाँ रहते थे, जब यहाँ से हट के दूसरी जगह गए तो यहाँ से उनका जो ट्रेडिशन था वो उन्होंने उसको कैरी किया। फिर वो जब नई जगह पे गए तो वहाँ से के भी उन्होंने कुछ कैरी किया। तो वो क्या हो गया, इट बिकेम अ मिक्सचर ऑफ बोथ ओल्ड विच दे हैड अर्लियर एंड द न्यू विच दे नाउ हैव। So this became a mixture somehow which created a new mixing of cultures. So this is how things become. Things travel from one place to the other place. The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and कल्चर देयर। तो हमें उससे देखने को पता चलता है कि कल्चर कितना शेप हो जाता है और कितना डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज वी गेट इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अदर प्लेसेस। दस रीजन्स बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज। तो रीजन्स जो होते हैं उनकी अपनी एक हिस्ट्री हो जाती हैं जो उन्हें क्या बना देती हैं, डाइवर्स, डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. तो दूसरा फैक्टर क्या होता है, ये एक फैक्टर हो गया कि शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, एंड दूसरा है जोग्राफिकल फैक्टर। जब हम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह सेटल डाउन होते हैं, सपोज इफ यू गो इन द सैंड from a mountain area, so of course your lifestyle will change. You will not wear woolen clothes over there. You will not come out in the sunny afternoons or noons. Instead, if you live in the mountains, you will like to wear woolen clothes and you can go out at any time of the day. तो ये होता है geographical difference and this brings diversity. For example, living near the sea is quite different from living in a mountain area. I hope you understood this. Not only do people have different clothing and eating habits, but even the kinds of work they do is different. In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surroundings. This is because in the city, people seldom grow their own vegetables and grain. Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. तो यहाँ हम देखते हैं कि घर जो होते हैं सिटीज़ में बहुत करीब करीब बने होते हैं। क्यों? बिकॉज इन विलेजेस पीपल ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, बट इन सिटीज़ पीपल डोंट डू दैट। इसीलिए उनके घर एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं एंड दे बाई ऑल द फूड आइटम्स विच आर नेसेसरी फॉर देम फ्रॉम द मार्केट। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. तो हमें जब डाइवर्सिटी सीखनी होती है तो वी कैन टेक टू डिफरेंट प्लेसेस, वन इज केरला एंड द अदर इज लद्दाख. बोथ आर क्वाइट डिफरेंट. Look at the map of India in Atlas. Locate Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these two regions would influence the following? The food people eat, the clothes they wear, the work they do. So we will have to find out these 3 things. You can see this is the picture, the dry barren landscape of mountains, desert of Ladakh. So this is how Ladakh looks. तो हम पढ़ते हैं लद्दाख एक डेजर्ट है इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो लद्दाख कहाँ पर है? एक डेजर्टेड एरिया है जो माउंटेन्स में है. कौन से? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन and is covered in snow for a large part of the year. There are very few trees that can grow in the region. तो ये बहुत ही स्नोई है इसलिए यहाँ पर पेड़ भी नहीं उगते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. So you cannot imagine the life during winters here because it all becomes snow. But in summer months the snow starts melting and people use it for drinking. People here keep sheep and the sheep in this region are special because they produce pashmina wool. तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं? पश्मीना वूल को प्रोड्यूस करते हैं. दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. तो वो ये शीप की वूल निकाल कर क्या करते हैं? पश्मीना शॉल्स बनाते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव.
The people in Ladakh carefully collect the wool of the sheep and sell this to the traders from Kashmir. Pashmina shawls are chiefly woven in Kashmir. और ये पश्मीना शॉल्स बुनी कहाँ जाती हैं? बुनी कश्मीर में जाती हैं, लेकिन पश्मीना वूल कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? लद्दाख से. The people eat meat and milk products like cheese and butter. Each family owns some goats, cows and zoos. These are yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is totally called Tibet. These caravans carried textile and spices, raw silk and carpet. तो यहाँ समझिए आप, ये जो है लद्दाख, ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रेडर्स नहीं आए इसलिए क्योंकि ये बहुत बैरन एरिया था या सूखा एरिया था. यहाँ बहुत सारे ट्रेड रूट बनाए गए. किससे? पासेस. पासेस किसे कहते हैं? जब दो माउंटेन आपस में से बीच में फट जाते हैं और एक रास्ता बन जाता है, उसे हम पासेस कहते हैं. तो वहाँ से लोग गुजरते थे बिकॉज इट बिकम्स अ शॉर्ट. एक छोटी जर्नी हो जाती है और लॉन्ग टर्न से घूम के आना नहीं पड़ता, इसलिए वो उन पासेस से होकर गुजरते थे और काफिले गुजरते थे. और वो क्या करते थे? वो टेक्सटाइल और स्पाइस, रॉ सिल्क और कारपेट्स, ये सब इन एरिया से ले जाकर बेचा करते थे. बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख. तो तिब्बत में बुद्धिज्म भी कहाँ से होकर गया? लद्दाख से ही गया. लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत. इसीलिए लद्दाख को क्या कहलाता है? एक लिटिल तिब्बत भी कहलाता है. Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. जो इस्लाम धर्म था वो वहाँ पर 400 साल पहले आया था और यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है इसीलिए काफ़ी है. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local versions of the Tibetan national epic, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslims and Buddhists. So mostly people from Buddhism and Muslim religion live over here and they sing Kesar Saga, which is their Tibetan national epic, and both sing. These are the local versions. So this is how they live over there. So I hope you understood till here. Children, we will soon meet in next part of part 3 of the same lesson, where I will cover another part of the chapter along with the question answers. So do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We will soon meet in next video. Take care.